In life process, children, this is our last lecture and we have completed all the aspect related to it, and I hope you understood all that concepts. And this one is the excretory system. In Hindi and Gujarati it is called the Utsarjan Tantra. Okay, so what is the meaning of exact sense of Utsarjan? Utsarjan means whatever the toxic material has produced inside the body during the process of photosynthesis, during the process of metabolism. Different metabolism process, when different materials which are not useful for body, it has excrete, it is thrown out from the body, and with the organ of that this work has done. This is called the excretory organs, and process is called the excretory system. So in human body we start. Before that let's talk about the plant. पहले plant के बारे में बात कर लेते हैं. अब हमारी तरह जो है plant को कोई specific organ होता नहीं है. तो प्लांट यू नो वेरी वेल, वो रूट से, स्टेम से, बार्क से, लीफ से, कहीं से भी जो है वो एक्सक्रिएशन प्रोसेस कर सकता है. तो पहले प्लांट की तरह हम लोग देख लेते हैं. अनलाइक एनिमल, द प्लांट डू नॉट possess any special organ or system for excretion. However, the plant excrete their waste in the different way. First, O2 during the process of photosynthesis. जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएटरी मटेरियल है, प्लांट के लिए ड्यूरिंग दैट टाइम ऑक्सीजन इज द एक्सक्रिएटिव मटेरियल. तो O2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट इज सेट फ्री डायरेक्टली इन द एटमॉस्फेयर. सो लीफ के थ्रू वो काम हो जाता है, बार्क के थ्रू वो काम हो जाता है. Plant removes surplus water by the process of transpiration through the stomata. That also you know very well. So that is also the excretory material for the plant. Sometimes plant store certain waste in the cell and the leaves there ultimately shed off. आप लोगों ने देखा होगा जो गम, रेजिन वगैरह चीज़ें होती हैं, बहुत बार प्लांट के बार्क में गम जैसी चीज़ें लगी होती हैं, चिकनाहट भरी चीज़ें लगी होती हैं. तो वो जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सब की सब जो है प्लांट का एक्सक्रिएशन है, और इस तरह से बार्क से भी प्लांट एक्सक्रिएट करता है. सर्टेन प्लांट स्टोर वेस्ट इन द वैक्यूल इन देयर सेल. अदर वेस्ट produced such as the crystals, resin and gum are stored by the plant and it is thrown out through the bark. Like that way the process of excretion is done by the plant. Now let's talk about the animal or the human being. यहाँ पे अगर आप देखते हो, if you see here, this is the excretory system of human being. Okay, in this kidney, which is the main organ of the excretory system, and it is the internal structure of kidney. किडनी में किस तरह से ब्लड प्यूरिफाई होके उसमें से जो है यूरिन फॉर्म होता है और कैसे बॉडी से बाहर फेंका जाता है, that is explained here. So this both pictures I am going to explain you. Okay, so see here, in our body excretory system, three way it is released through the body, solid form. Okay, that is called the defecation. Okay, जो हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं, फेजेस बॉडी से बाहर निकालते हैं, that is okay. नेक्स्ट इज द एक्सहेलेशन, यानी कि सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं उससे. एंड लिक्विड, दैट इज द एक्सक्रिएशन. अब एक्सक्रिएशन लिक्विड में टू तरीके से होता है, एक तो जो है यूरिन थ्रू होता है, दूसरा स्वेटिंग यानी पसीना. तो इस तरह से एक्सक्रिएशन बॉडी में जो है दो तरीके से होता है, और उसके लिए जो ऑर्गन है दैट इज द किडनी. सो किडनी in human being is a pair of kidney from the main excretory organ. They are located in the dorsal side of abdomen cavity. अपने स्टमक के बैक पार्ट में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. The kidney are the reddish brown color. आप यहाँ पे देखोगे मैंने उसी तरह से कुछ ब्राउनिश कलर में इसको ड्रॉ किया हुआ है. बीन शेप, बीन के आकार की होती है. एंड समवॉट फैटेड ऑरेंज. द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी. किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड प्यूरिफाई होता है. ओके, सो विच पार्ट आर देयर? फर्स्ट इज द यूरेटर.
A long narrow ureter emerge from the middle of the inner margin of each kidney. ये अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो है यूरेटर जो है ओके, ये जो ग्रीनिश कलर की पाइप दिख रही है, दिस इज द यूरेटर. ओके, किडनी bean shaped and somewhat filtered organs, urine formation taken place by kidney. First is the ureter. The long and narrow ureter emerge from the middle of the inner margin of each kidney. The ureter is a posterior and open in the urinary bladder. यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो यहाँ पे सैक शेप में बराबर है, ये थैली जैसा जो दिख रहा है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट इज कॉल्ड द मूत्राशय. बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है. यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी इज कैरीड द यूरेटर एंड पॉर्ड द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये जो सैक स्ट्रक्चर में है. इट इज अ distensible muscular sac like structure located in the lower end of the abdomen cavity. It stored the urine temporarily. जैसे ही ये जो है फिलअप हो जाता है, सेंसेशन क्रिएट होता है और यूरेट्रा के थ्रू यानी मूत्र मार्ग के थ्रू जो है यूरिन बॉडी से बाहर चला जाता है. नेक्स्ट इज द यूरेट्रा. The urethra bladder at a narrow posterior and continue at the shortest muscular and narrow lubricant passes called the urethra that opens in the exterior of the small apparatus called opening of the urethra. The urine is expelled out through this opening. Okay, next, अब इसके अंदर ये किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कॉल्ड द नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो इनका फंक्शन कैसा है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे. तो पहले हम लोग जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की हम लोग बात कर लेते हैं. In each kidney of the human being there are many 1 million यानी कि 10 लाख every minute convoluted tubular structure called urinary fetus tubules. Each tubules is the excretory unit known as the nephron. तो ये जो है इसके अंदर का किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरह से है, और ये जो है प्योर ब्लड में से है. बराबर है, जो भी गंदगी है जो भी कचरा है उसको जो है क्लियर करके और इसको जो है यूरिनिफिकेशन का काम करता है, यूरिन बनाने का काम करता है. ओके, सो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज the component in the structure is excretory unit. Nephron are as follow. सबसे पहले इसके अंदर ऊपर है, देखो ये आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे राउंड शेप में, दिस इज कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल. Each nephron begin with the double walled hollow cup shape. ये देखो ये डबल वॉल है, देखो यहाँ पे व्हाइट कलर के दो, और ये कप स्ट्रक्चर में है, कप शेप structure called the Bowman capsule. It is located in the cortical region in the cup shaped groove in the Bowman capsule. These lies the small mass of highly colloid blood capillaries. देखो इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, देखो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये रेड कलर में जो जा रही है वो called the glomerulus. The latter is formed the compact and called the mass of blood capillaries formed from the branching and rental arteries. Neck, इसका जो ये पार्ट है ये यहाँ से जो निकल रही है ये बराबर है. तो the Bowman capsule lead into the short narrow tubular part called neck. ये जो है यहाँ से देखो इस तरह से और ये इस तरह से. फिर है proximal convoluted tubules. It is a narrow tubules colloid region and urinary tubule and immediately follow the neck. फिर है anal slope. It is U-shaped part, urinary fetus tubule and follow the posterior convolute tubules and follow the distal convoluted tubules. यहाँ पे देख सकते हो कुछ, देखो ऐसे U शेप में जा रहा है बराबर. यहाँ से देखो ये इस तरह से है ये पूरा स्ट्रक्चर. The entire urinary fetus tubules nephron is closely surrounded by blood capillaries.
Collecting tubules receive several distal convoluted tubules from the many nephrons, and several bloodhead of the collecting tubules open through the process of nephron. The funnel shaped lumen called rental pelvis, and pelvis open into the ureter its outside. ओके अब यूरिनिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ब्लड में से किस तरह से जो है इसको प्यूरिफाई किया जाता है, नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस को कैसे सेपरेट किया जाता है, उसकी अब ये बात कर रहा है. द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग इन द किडनी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द अल्ट्राफिल्ट्रेशन. द ब्लड brought by the rental arteries into the kidney contains several metabolic liquid waste substance. This blood passes through the glomerulus and Bowman capsule. The blood flowing through the glomerulus flow the sufficiently high blood pressure, due to which the blood flowing through the glomerulus gets filtered. As a result, fluid containing various useful as well as useful or harmful substances are filtered to enter the lumen of the Bowman capsule. This filter includes the large of water also. This process of filtration occurs under the pressure and hence known as the ultrafiltration, and fluid that enters the lumen of the Bowman capsule is called the filtrate. फिर है ribsoportion. The filtration form as a result of the ultrafiltration process through the convoluted tabular region and excretory unit at the time of blood capillaries surrounding in the wall tubule absorb the surplus water, glucose, amino acid, most of the mineral ion through the cell tubules. Such absorptions occur the Henle loops also. The process of absorption of the substance from the filtration is called the reabsorption. At the end of reabsorptions, the remainder fluid contain chiefly excretory substance. This fluid is called urine. This urine passes through the pelvic. See, it is given here. Pelvis and ureter, and shorter the urinary bladder. When urinary bladder gets filled with urine, it may contract and expel the urine out of body, and like that way the entire process of excretion has completed. Okay, so here we have completed this chapter. हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किया है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट विद दिस वीडियो. इसके साथ में आपको मिल जाएंगे. ओके, और अच्छी तरह से उन सबको लर्न करना. जितने भी मैंने फिगर्स यहाँ पे बोर्ड में ड्रॉ करके दिए हैं उन सब की बराबर से प्रैक्टिस करना. एंड विथ दिस नेक्स्ट चैप्टर, आपका 5th चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और वहीं से आपके पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत है. बिकॉज जब तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नहीं मालूम पड़ेगा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों हुई ये नहीं मालूम पड़ेगा, तो आगे केमिस्ट्री में कुछ भी मतलब नहीं है. ओके, मुझे मालूम है आपका साइंस थोड़ा स्लो जा रहा है कंपेयर देन अनदर सब्जेक्ट. मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है, एसएस भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन साइंस में क्या करूँगी, इतने सारे टॉपिक हैं और बिना इनको डीपली एक्सप्लेन किए काम भी नहीं चलेगा. बिकॉज नेक्स्ट जब आप लोग 10th में जैसे 11th में जाओगे साइंस लोगे तो इन सब की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. ओके, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर गोइंग सो डीप. ओके, सो हियर दिस टॉपिक इज ओवर, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट योर 5th चैप्टर. ओके, सो सी यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर. बाय.